Assalamu alaikum. When you see Maha Tahirani as a model, she's dainty, she's graceful, she's glamorous. But beyond the beautiful exterior, I've gotten to know that Maha has plans and ambitions and she has the will to carry them through. इसीलिए her fashion career spans about 5 years, and all through these years she's been nominated at the LSAs, and then last year she won Best Model. And now of course she's turned the same will towards acting. तो क्या महा अब फैशन छोड़ के एक्टिंग की तरफ जाएंगी? क्या वो फैशन और एक्टिंग को बैलेंस करेंगी? क्या उन्हें फैशन ज़्यादा अच्छा लगता है या एक्टिंग? ऑल्सो विल शी बस्ट दैट मिथ के मॉडल्स कांट एक्ट? There's a lot I want to ask her, and I know that she has some great answers for me. Hi Maha, how are you? Hello, Malia. First of all, thank you. That was a lovely introduction. I think very interesting one. And thank you for all your enthusiasm towards my career. पहला सवाल आई थिंक आपका था कि मैं मॉडल की तरफ जाऊंगी या एक्टिंग की तरफ ये आपसे सब पूछते होंगे ना? This is the I think most yeah, common. this is a pretty common question. हाँ. काफी लोग पूछते हैं. But no, my vision is a hybrid. When I started this with law also, my vision was that as a woman, I will never leave anything to pursue anything else. I won't. अच्छा. And I do want to break that stigma that models cannot act, because they do. I've done the movie. It's won the best awards. It's probably the most awarded movie in Pakistan now. जामुन का दरख्त. Yeah. हाँ. So I do want to break that stigma that models cannot act. Or even so, if people think that actors cannot model, please don't confine women at all anymore. You don't ever have to leave anything to do anything else. You can ace so many things at the same time. Doesn't it get exhausting? ये और वो और law भी है. आप you are of course also running a law firm. You're a partner there, right? So doesn't it get exhausting balancing all of it together? I feel like Malia, जिंदगी exhausting है. अच्छा. In general, I think जिंदगी जीना exhausting है. आसान तो कुछ भी नहीं है. और जो कुछ आसान है वो powerful नहीं है और successful भी नहीं है. I don't think you get anything good at the cost of easy. Nothing is easy. You drain yourself, you learn, you do hard work, you do research, you break stigmas, you make new signatures. It's all hard. It's very draining also, to be honest. Yes, you're right. It's very exhausting. But then no good thing has ever come that easy. You don't mind getting drained then? You're like, कोई बात नहीं. As long as the end result is something that you are aiming End for. goal is always to win and excel. अच्छा. As long as I get there, it's all worth it. हाँ, मैंने भी कहा ना, you're very determined. You are. The goal is to win and excel. इसीलिए the LSA win, the nominations, how you very quickly came to the top tier of models, है ना? ये सब यही है कि you don't have any problem with getting drained. You're okay with working hard. I do have a problem with mediocrity, and I think it's not something that I made. It came from my family. हाँ. My father and my mother, both of them were very excellent people. But मेरे अब्बू जी मुझे एक बात कहा करते थे that तुम बहुत सारी चीज़ों की capable हो, and you have an overwhelming palette, which I used to have when I was a child. Like कथक भी करनी थी, deep sea diver भी बनना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी, law भी पढ़ना था. The only thing he ever told me was कि जो करना है करो, हार के नहीं आना. यानी दिल से Come back करो. home and win. Don't show me mediocrity. And I took that as an advice, and I think I made that my goal. When I pick it up, I make it my mind कि जीत के आना. No matter how difficult it is. अच्छा. अच्छा चले. Good advice, and it's worked for you, na? Yeah. I think it's motivating. That's what we should tell our girls. We should not just tell them कि अच्छा ठीक है, you made an effort, अब रुक जाओ. तुमने पढ़ाई कर ली, तुम इतना नहीं कर पाई, छोड़ दो, तुम लड़की हो, कोई बात नहीं. Do it again. Do it better. And win. Beat the other person. अच्छा. So until unless you don't win, do it again. Don't tell yourself कि I wasn't good enough. You're always good enough. अच्छा, now in fashion modeling, I know you told me a little bit about how you started out as a model, और उस वक्त you didn't know the first thing about modeling. लेकिन फिर आपने जीत के दिखा दिया. Tell me about that first show, the first time you were modeling. You were there, but I think when I entered modeling, one of the biggest fears that I faced was that I was put into this group of models who were really older than me, of course. I was only 19. So firstly, though, I could not relate to anyone. And even if like they were less experienced or more experienced or greater ones, bigger ones, lower ones, I could not relate to anyone. Secondly, I was spending a lot of my time as a law student. I was not used to heels.
I'm 5'9", I was tall enough above average, तो heels मैं वैसे ही नहीं पहनती थी, तो वो तो वैसे ही चला गया ना, मसला एक बन गया कि अब मैंने रैम्प करना है और हील मैंने पहनी नहीं है कभी रेगुलरली. So I think in one of those shows, a lot of designers were very kind to me. I'll give them that. But the moment they saw me, I got a lot of attention. They were very humble. They gave me their main openings also. And Hussein did. Hussein gave me one of his Hussein main Rihar? openings. Yeah. Acha. And so did Ali Zishan. He gave What me a was your very beautiful- first show? It was PFTC L'Oreal. Acha. And which designer did you first work for? My first opening walk was Hussein. Acha. Okay. And the finale show was Ali Zishan. And that was a funny and very humiliating, embarrassing, but at the same time, I'd say very learning experience for me. So I was wearing this beautiful lehenga, and backstage, everybody was in awe that who is this girl? She's so beautiful, and this outfit is just like, it's almost like it was made in the stars for her or something like that. So it gave me confidence that, I look great, I feel great, people are great, they trust me. Can't be that hard. But I had never really walked in lehengas with so much spotlight, and you guys sitting there and making videos and the commentary, all of that. वो part तो मुझे पता ही नहीं था. So when the spotlight came on and I started to walk, मेरा एक पैर जो है वो मेरे लहंगे की कैन में फंस गया पहले स्टेप में ही, और मुझे पता चल गया like you get a nervous here, a signal कि ये हो गया आपके साथ बॉस, तो मेरे साथ हो गया था. And then I was like, okay, अब मुझे निकालना तो नहीं आता, but I have to continue with the other leg. I continued and I tripped a little. I didn't trip on the floor, I just tripped a little. Everybody saw, but they knew कि she was new. So थोड़ा मुझे लगा कि नहीं इतना कुछ हुआ. I continued walking, I tripped again, and it was a round walk. So if I had to count, I can't give you an exact one, but I'd say at least 7 to 8 times I tripped, which was typically the whole walk. एक लड़की ट्रिप कर रही है, फिर एक स्टेप लेती है, फिर ट्रिप कर रही है, फिर एक स्टेप लेती है. And it was embarrassing. Like for me, I mean, I think it was embarrassing for the designer also because he put his main outfit on me. But for me also, I was like, for the person who always likes to win, I was like, Maha, yaar, to boss, your winning streak is gone. Like this is not recoverable. And I saw the other models, and there was this choreography कि आपने यहाँ आके खड़ा होना होता है. So I was supposed to stand in the front after because I began the show. And because I tripped so much, मैं इतना डर गई कि मैं अपनी जगह भी भूल गई. So I came into the end and I stood there. And all the other models were confused because सबकी choreography हुई होती है. And my match was, I think, Hasnain. And Hasnain had to be in the beginning. So मेरा match वहाँ खड़ा है, मैं यहाँ खड़ी हूँ. Show is weirded out. And when I came in, I felt like, I didn't expect कि कोई मुझे चीखेगा, of course, because everybody was very polite. But I knew that I had lost. That was my first cue to ever realize in life that you don't go unprepared. You do your research, and if you want to win, then go in if you want to win. Otherwise, come out. But this cannot happen again. So I think within that span, 2 months mein commercially, I became very successful. And everybody got to know who I was. I was nominated for the first time. Then the next ramp came. And before that, I practiced a lot. Even though... लहंगा पहन के practice कर रही थी? Yes, I did. अच्छा, वाकई? I wore the lehengas backstage, और मैं उनकी लेंथ चेक करती थी, उनकी लेंथ कटवाती भी थी, कभी-कभी मुझे ज़रूरत पड़ती थी. Okay. And I would practice it कि मुझे कितना comfortable You would लग रहा walk है. backstage and make sure Yes. कि ये मैं कर पा रही हूँ manage. I would do that, and people would be like, अब अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब आप, you're a famous model. 2 months में I gained a lot of fame. But I was not ashamed of it. I was like, अभी जो हो रहा है ना, जो तुम लोग देख रहे हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. When people will come, I want to give them an impression that, you know what, she learned. And I do remember that my choreographer first time in PFDC was Sadia. अच्छा. And when she was choreographing me and she saw first to my shows, she was like, there's 2 kinds of walk. There's a swan and then there's a duck. She didn't say more, but that was good enough insult for me. And I was like, I think she doesn't need to dignify who I am right now. But in the next show, I think it was by God that she was again the choreographer. And she was like, I think my duck has not just turned into a swan, she's gorgeous. अच्छा. She's stunning. To me, that is an accomplishment. And then you guys, obviously, I think you and everybody else, you guys started complimenting me. And I realized that, if you want to be somewhere, then be the highlight.
don't be anything else. Back then the ramp really counted. अब तो दूर दूर तक कोई catwalk show नहीं होता. But back then of course it. Yeah, back then I think when I came in it was quite a deal, and we enjoyed it also. I think अब तो I don't think that ramps अब होते हैं इतना जो अब होते lawn हैं का वो ad होता है. अब अब वो lawn का लॉन ad का ऐड होता है. होता है, थोड़े से ड्रामेटिक्स होते हैं उसमें, थोड़ी bridal wear आ फैशन जाती नहीं है. होता उसमें, मज़ा नहीं आता वो देखने Marketing में, होती है. बहुत मार्केटिंग होती है. आई थिंक इवन द पूल्स जिस ज़माने में जिनके साथ मैंने वॉक करना सीखा था, हिरा शाह थी उनमें, मेरीन सैयद थी, फौजिया थी, ज़ारा आबिद थी, and they used to like teach me that you know this is how your shoulders should be. They helped me out. Femeen थी, इन सब लोगों ने. Okay, so. पर अब मुझे वो नज़र ही नहीं आते वो नाम. अब जो मुझे नाम नज़र आते हैं वो मुझे पता भी नहीं है. I don't even see them in commercial shoots. So it's very hard for me to believe कि ramps अब उस league में रहे हैं. Who do you, the people who you're working with now, or who you see at shoots now, you don't know a lot of those models? I do pick. I think I pick my projects very exclusively now. So I make sure that I'm working with people that I do know and are experienced enough. I don't mind working with लेकिन new shoots people. में generally अगर तुम Instagram पे कोई shoot देख रही हो या किसी magazine में तो बहुत सी models ऐसी होती हैं जिनका आपको, हालांकि आप established model हैं, आपको पता नहीं होता उनका. बहुत दफ़ा ऐसा होता है, which I don't take negatively. I think I like the fact that there's a high influx of new people getting chances. But I feel like that it's commercialized to a level that they don't get chance enough to be highlighted or find their potential as a model, find their signature. Like, you know, Fawzia ka glamour tha, Mehreen Sayyed ka was this, you know, her signature walk. Grace. Femeen has this fierceness in her eyes, in her walk, her body language and everything. What's yours? Zara was hot. Mine was confidence and my eye contact. You still have the confidence because people and always eye kept contact. telling me that I had the biggest eyes in the industry. So I use that because I think that eye contact is the most powerful thing ever. You figured this out on your own या किसी ने आपको बताया? I think I figured it out. Obviously, people compliment you, but to put it into action, execution, that's on you. Acha, this is great considering that you were just 19. You know, so you were young. And this industry was completely new to you. Yeah. आपके इर्द गिर्द तो कोई ऐसा friend या family member नहीं था ना जो fashion industry में था. तो this is पता नहीं. I guess it was meant for you कि आपको ये समझ आ गया and then you. I did consider took it that. forward. I felt like there are a lot of things after law that happened to me in my life were just opportunities that came to me, and I took them like a flow. Destiny. I just did not decide कि मुझे ये करना है या नहीं करना है. I just decided कि मुझे ये करना है और मुझे जीतना है. अच्छा बताओ, back when you started out, fashion was an exciting space, you know. Fashion weeks हो रहे थे, shoots होते थे, creative काम भी होता था, commercial काम तो होता ही था, but creative काम भी होता था. Did models help each other, or was it a very political scenario? I think that could be going both ways of an answer. ऐसा नहीं है कि सारे models एक दूसरे के साथ अच्छे थे, कुछ बहुत अच्छे थे. Like I found some very kind ones in my life. Because I was the youngest, I've had to face some that were very, very reserved and very stingent towards me, or did not like that I was going up. Because many nominations, maybe I think if you know, because you guys used to write about it, I used to be always the baby in the nominations. बाकी सब बड़े होते थे मुझसे. From Sadaf to Femeen to Zara, Moshk, everybody was much older than I was. But I think I like to see the positive side. The ones that were positive towards me, I learned a lot from them. I never copied them. I took them as inspiration and I made my own. The ones that were not interested, I feel like I don't take negativity in my life. If you're negative, I walk out of that space. ठीक. अच्छा, now present day fashion, because तुम कह रही हो तो कि you will follow a hybrid model. Fashion and not drama acting, acting overall. It could be film or drama. You're gonna manage, and your law career. You will balance all of this, inshallah, together. Is fashion still an exciting place to work in? Considering, you know, my skill and how much I've achieved in fashion, it's always great to work in fashion because I bring creativity to commercials also. I've been built as a model like that. We've been taught like that and trained like that. But I'd still say that for now, I think my focus is more towards acting because I do think that fashion is getting towards a little bit of a toxical side. Achha. We get a little more scandals and creativity thodi si I would say has taken a toll. Like when I was working and when people ask me, which is a very common question, that how did you go international? I was going to ask you. I always say that, you know, platform mere bhi same the.
इन सब लोगों की भी सेम है और पोटेंशियल भी सेम है. It's not that I'm better off than all the new influx of the girls. That's not true. They're just as good or even better. I don't know. But I followed the same platform. I think it's just that the commercialization took over the creativity of fashion way too much. Which does not, now it kind of has become this, a budge between us going global. अच्छा, यानी कि अब इतना शूट कमर्शियल होता है कि क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स नेचुरली एनीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड इफ दे टेक नोटिस ऑफ पाकिस्तानी फैशन शूट तो वो एक लॉन के दुपट्टे का ऐड तो नहीं होगा ना, वो जाहिर है कुछ क्रिएटिव होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा, तो उसी को नोट करेंगे, जिसकी वजह से यू आर सेइंग यू गॉट नोटिस्ड बाय इंटरनेशनल ब्रांड्स. अब वो वाले शूट्स बहुत कम हो रहे हैं, राइट? हाँ. एंड आई थिंक दैट अगर हम दोबारा उसको 20% क्रिएटिविटी भी ले आ सकते हैं तो आई डोंट थिंक पोटेंशियल में कहीं भी कमी है पाकिस्तान में. लाइक इंटरनेशनल जाना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है बिकॉज वी हैव ब्यूटिफुल गर्ल्स विद लवली बॉडी लैंग्वेज. That's how I went international. That's how my movies international, my brands were international. But ऐसा नहीं था कि मैं उनके पास गई थी. They saw the same pictures, the same covers, and I was in कवर्स Pakistan. चेंज हो गए ना, लेकिन अब वहाँ अब वो चेंज हो गए. अनफॉर्चुनेटली प्लेटफॉर्म्स पे अब वो क्रिएटिविटी ज़्यादा शो नहीं. पेड कवर्स हैं, पेड ब्राइडल एड, पेड लॉन एड, राइट? पहले कवर जो होता था वो कुछ ड्रामेटिक होता था, कुछ नया होता था. Romantic या creative, anything that's out of the box. Even if it's related to your culture, that's not a problem that it's related to your culture. Our culture is beautiful. Of course. I think we have the most variety culture ever. Kilashi लोग हैं, हज़ारी लोग हैं, they all have very different things. हाँ बिल्कुल. तो we could do fashion there also, लेकिन हम differentiate नहीं कर रहे अब. वो थोड़ा कम हो गया. Which is sad. ये बताओ कि क्या पहले मॉडलिंग वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, यानी कि फॉर इंस्टेंस टू बी इन द कैंपेन, इन अ मेजर कैंपेन बाय अ टॉप टियर ब्रांड, आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती होगी शायद पहले कि ओ दैट ब्रांड सिलेक्टेड यू एज देयर मॉडल, यू नो. Is less work needed nowadays for girls, new girls entering the industry to become part of major campaigns? Instagram रील से काम चल जाता है. मेरे टाइम पे तो I can talk from my time. मेरे टाइम पे ज़रूर ये स्टिग्मा था कि working as a new person, working for a certain brand would be a big deal. But और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी. उसके लिए of course आपको मेहनत करनी पड़ती थी. And there were people that you would see on their pages कि they would take very selected people. आपको I don't want to use leagues as a word. There's no such thing as a league. Potential एक चीज़ होती है. आपकी league तो आपकी potential के साथ बढ़ जाती है. लेकिन उस वक्त वो एक certain league picked up थी. The cream was picked up and they knew what to do. It was not without any reason. Bias नहीं था. उन लड़कियों को पता था कि वो क्या करती हैं. Like Iman Suleiman, stunning model. Mushk, again, Femine, Marine, all of these people, they were stunning. So they were working for these brands and I got picked the same way. On merit. On merit. On merit, हाँ. But also I think that successful होने का दूसरा एक side ये भी देखना पड़ता है that you don't end up giving too much importance to the brands. You become the brand yourself. If you want to be successful yourself, you cannot always run after the brands. ठीक है, for a beginner, it's an amazing thing. It's an initiative कि आप इतनी मेहनत करें कि आप you do a big thing. Like for me, it was the crack was Dior and Balmain, which was a big thing for me. Yeah. But now I think that I want to be even. The goal is to be high enough that they achieve me and they want me as the face. That is the goal. You have to dream bigger. हाँ, you should be the dream rather than them being your dream. हाँ, सोचना तो यही चाहिए. लेकिन वहाँ अब तो मुझे नहीं लगता इन्हीं सारे जो मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की नहीं बात करी, लोकली इन्हीं सारे ब्रांड्स में जो एक ज़माने में इतने सिलेक्टिव थे, इतने पिकी थे, जिसमें जब एक मॉडल सिलेक्ट होती थी तो शी'd बी सो एक्साइटेड एंड शी'd पोस्ट अबाउट इट. अब वही किसी को भी बेस्ड ऑन हर इंस्टाग्राम कवरेज, बेस्ड ऑन जस्ट द फैक्ट दैट शी इज़ अ पॉपुलर टिकटॉकर हायर कर लेते. डू यू थिंक वो सिलेक्शन प्रोसेस अब चेंज हो गया है मॉडल्स के लिए? आई थिंक बिल्कुल हो गया है, ऑफ कोर्स हो गया है. पर उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं. ऑफ कोर्स प्रोज ये हैं कि कुछ नया टैलेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है तो उसको इजी एक्सेस मिल जाता है. बट उसके कॉन्स ये हैं दैट अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर नॉट वर्दी ऑफ इट एंड नॉट वर्किंग हार्ड इनफ. क्योंकि हमारे बड़े ब्रांड्स या पीपल लाइक मी और पीपल लाइक यू, आर प्लेटफॉर्म्स, वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान. Like my movie right now represents the whole Pakistan. I have the responsibility of representing my country. तो जब हम selective नहीं होते,
जब हम एक्सक्लूसिव नहीं हो पाते तो हम अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. What we are representing is mediocre. अच्छा, मैं इसमें ऐड करना चाहती थी वो ये कि शायद जब आप वो 2-3 महीने अ, छोटे ब्रांड्स के साथ वर्क करते हैं या बस प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्किल को बेहतर करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज मॉडल्स वाली हो जाती है, आपकी वॉक वैसी हो जाती है. व्हेन अ गर्ल who is great, who looks good, who has potential, just gets off an Instagram reel and becomes a model, maybe she won't be able to exude the same glamour. मेरे Yeah, ख्याल से that also. वो मेहनत करनी, वो तकलीफ के शुरू के दिन गुजारने थोड़े ज़रूरी होते हैं ताकि आपको काम करना आ जाए. अभी तो कैटवॉक नहीं है, नहीं तो वो One, I अलग ही think that बात होती थी. I'd say one, वो तकलीफ के दिन क्योंकि मैं भूलना नहीं चाहती है, वो बहुत चेरिशेबल होते हैं जब आप एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, because they are the moments and people that make you, generally speaking. To your other point, I feel like कि जो आप छोटे ब्रांड्स के लिए भी काम करते हैं, nothing wrong with that. Obviously, No? everybody wants to make money and they are making money. It's commercialization happens in every country. हर हम्म. जगह होती है. हम्म. I just feel कि कमर्शियल काम में आप सीख नहीं सकते. There's no space to learn. क्योंकि कमर्शियल एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव से बना हुआ है. You know, I'm catering to a woman that has to wear हाँ. something हाँ. in a certain way. मैं उसमें ग्लैमर या कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकती बिकॉज दैट हैज़ टू बी रिलेटेबल. जस्ट लाइक अ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग. अगर मैं कभी एक्टिंग करती हूँ तो मैं उसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड माइनस नहीं कर सकती क्योंकि आई फील लाइक आई हैव टू मेक दैट कैरेक्टर एज रिलेटेबल टू द ऑडियंस एज पॉसिबल. बिकॉज इन द एंड एवरी थिंग इज द पीपल दैट हैव मेड अस. जिन्होंने हमें बनाया है हम उनको तो नहीं धोखा दे सकते. हम उनके लिए हैं, उनकी वजह से हैं. तो उसमें आपका लर्निंग, even though you are a beautiful person and you probably learn how to stand, but the element of a supermodel, वो आपको उसके लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ से गुजरना पड़ता है. ऑफ कोर्स वो आई थिंक आप कमर्शियली नहीं सीख सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसमें बाउंड्रीज होती हैं. उसमें शायद तुम्हें सीधा खड़ा होना हो और बस लॉन का दुपट्टा ऐसे हो ताकि दुपट्टा नजर आए, कमीज नजर आए, जैसे आप पैंट देखती हैं, नजर आए. आप इंस्टाग्राम देखती हैं, वो एक रेगुलर चीज़ है, हमें हर रोज दिखती है. हाँ. A lot of brands do it, तो उसमें एंड नहीं इट होता. वर्क्स कमर्शियली ऑफ कोर्स. Yeah. वाकई जो उनकी कस्टमर है वो मॉडल से ज़्यादा जोड़ा देखना चाहती है, Yeah. wants to see the दुपट्टा, the chiffon, the Yeah. silk, the borders. So it makes sense, but of course from a creative perspective Yeah. उसमें आपका कोई इतना learning process हाँ. शायद The ना होता. supermodel element comes when you know you have this urge to commercialize and also make things look different. बहुत सारी मॉडल्स हमारी जो अच्छी मॉडल्स हैं वो कमर्शियल मॉडलिंग करती हैं, मैं भी करती हूँ, पर हम वो सीधा खड़ा होकर नहीं करते. वी हैव टू एड सम एलिमेंट दैट्स अस, दैट आइडेंटिफाइज एज मी और फेमीन और ऑल द अदर नेम्स दैट वी टेकन, द वेरी रिस्पेक्टेड वंस. तो वी सटली एड दैट एलिमेंट जिससे वो चीज़ वैसे ही रहती है, कमर्शियल रहती है, लेकिन वो सिग्नेचर हमारा होता है. आपकी वो कोई और प्रेजेंस नहीं कर नोटेबल सकता. हो जाती है ना. हाँ. मेरे ख्याल से सुपर मॉडल एलिमेंट कैट वॉक मॉडलिंग से भी आता है जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त Definitely. दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही. तो ये भी एक मसला है कि फैशन वीक्स हैव एंडेड, ऑल वी हैव इज But that's ब्राइडल also, I फैशन. think that is exactly what my previous point was, Malia, कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे हिट लेती है, इंटरनेशनल बहुत बड़ी मार्केट है and they love you. To be really honest, I felt it, that how much love I've gotten internationally is stunning. तो आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज बाहर भी हैं. हाँ. Only if you just अच्छा. make a little bit of effort. अगर आप प्लेटफॉर्म वाइज भी करते हैं, कर लें, because there is a huge market outside that loves you. ये बताओ क्या तुम बहुत बार वो जो पाकिस्तानी ब्रांड्स जो इंटरनेशनल शूट्स करते हैं, आर यू आल्सो पार्ट ऑफ दोस क्वाइट ऑफन? Very less of them. अच्छा. Mostly my international shoots are international brands, which are a lot of them. So I don't get the space also in my schedule. But I wouldn't say I don't do Pakistani international ones, but I do them very less often. Mostly from the stigma, because I don't think कि international shoots जो Pakistani brands करते हैं, and I don't mean that as an offense, but उसमें I don't know, somewhere मैं तो as a supermodel, I don't think it's a case that happened with me, but I've heard a lot about it. So I'll say it on the behalf of other people, that they consider that, you know, going in for an international shoot does not need to be paid, or if it is paid, it's a token amount, which अच्छा. makes no sense to me. अच्छा. Because आप काम उतना ही कर रहे हैं, बल्कि शायद उससे ज़्यादा कर रहे हैं. तो why is it such a big thing for Pakistani? यानी कि they're modeling, they're working all day Yeah. long,
बट वो जो उन्हें एक टिकट मिला है, उन्होंने बाहर की एक मुल्क देख लिया, वो Yeah. पेमेंट है उनकी, वो payment even है though they're working, it's not like they're on vacation. Yeah. But that's not fair. It's काम not, तो and काम है. I think that it's not just here. I mean, I'm just saying this, but I think if Awam wants to check reality of things, recently I saw an interview of an actor that I really respect his acting, Yasir Hussain, who said a very similar thing in an interview. मुझे ही कहा था. And I was like, you know what? Then I'm not wrong. Whatever I'm hearing and whatever I'm turning down, I'm not wrong. But he also said कि अपने आप को सस्ते में नहीं आप नहीं बेचना कर चाहिए. सकते. That's why I've lessened the Pakistani international ones, because you cannot take that for granted. I और can go आपकी and use मेहनत my है. money for taking a vacation outside. हाँ, and that would be a vacation. That would be a rather than vacation. you getting up at 6 मैं in the काम morning भी and कर रही हूँ modeling 6 all day बजे. long. Why is it that big of a deal कि क्योंकि आप मुझे बाहर लेके जा रहे हैं? अच्छा चलो, ये तो इंटरनेशनल शूट की एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे बाहर कहीं प्लस हो, मलिया the girl क्यों is करेगा? working. लाइक जब मैं इंटरनेशनली काम कर रही हूँ इंटरनेशनल ब्रांड के लिए, and they're paying me, flying me and paying me in dollars. Why would I settle for less when I'm worth more? Even if you weren't, when you're working, when you're waking up at 6 in the morning and getting Yeah. dressed and wearing the joda, Absolutely. it is not a vacation. It's not. So you know, regardless, मतलब बहुत ही गलत बात है, बहुत बुरी बहुत बात गलत है. बात है. और ये भी बहुत बुरी बात है कि बहुत से brands यहाँ के शूट के भी पैसे नहीं देते, which is something that you models are always I fighting think हर against. महीने हाँ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें कोई ना कोई मॉडल ये मतलब चाहे जितना भी शोर मचा लो, ये आदत ब्रांड्स की जाती ही नहीं है. आई डोंट, कुछ बेहतर हुआ है ये मामला? I think मुझे बाकियों का नहीं पता, but when people get advice from me and they want to know how I fixed it for myself, I was a lawyer. I went contractual. अच्छा. I feel like कि बाहर भी चीज़ें प्रोफेशनली होती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअली होती हैं. व्हाट्सएप पे डेट ले लेना और दे देना जो है ना, एक अनप्रोफेशनल चीज़ है. कॉन्ट्रैक्ट्स करें. पीपल शुड नो कि आप you will be settling for, what kind of timings you'll be working with, what kind of, अगर आपकी कोई रिलीजियस चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपने पहननी है, पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, कोई भी चीज़ें हैं, ये सब बताएं. mention all of that. So that the brand knows prior, you know the brand prior. Mention your payment, You do your all way this? of payment. You do all this? Yes. I make them sign. I decide my mode of payment, my date of payment, and that's how it's done. You bound them legally. और बाहर ऐसे ही होता है मलिया. हाँ, यहाँ भी सारे ऐसे ही famous होना लोग चाहिए. जितने आपके artists तुम हैं, सब लेकिन ये ऐसे करते हैं. करके भी कभी न कभी बैड एक्सपीरियंसेस तुम्हारे हुए हैं, एंड पीपल नो ऑफ दिस ऑफ कोर्स बिकॉज यू स्पोकन अबाउट इट, अबाउट I ब्रांड्स spoke नॉट about an पेइंग. experience that was older. और उस टाइम पे I wasn't doing the legal thing. अच्छा, now you are making sure. अब तो it's been like an year and a half. मैंने तो boycott बहुत पहले किया था उस brand को. I stopped working, but when I got an offer from them, it was kind of an audacity for me. Okay, you know, this is some real audacity for you to tell me this while I boycotted you, banned you, and while not just me, I think I put up a screenshot of at least 50 models in Pakistan. 20 of them very renowned. You all saw it, written in screenshots. There were groups of it. तो मतलब मैं अकेली उस कश्ती में सवार नहीं थी और मैंने तो वो ग्रुप भी नहीं बनाया था. अच्छा, ये मुझे बताओ, उस वो जो शोर मचा था अबाउट 2 years ago, उसके बाद से क्या ब्रांड्स कुछ तमीज़दार हो गए और उन्होंने have they started behaving? क्या अब वो पे कर रहे हैं मॉडल्स को? I get complaints from the younger generation They कि नहीं still हुए. do this. अच्छा. But मेरे केस में तो ऐसा अब नहीं है. मेरे केस में तो I would. वहाँ तुम्हारे साथ वैसे भी अब कम होगा because of course your status in the modeling industry is different, right? But I am saddened that the younger ones are still facing this. I feel like even though status quo is a thing, I agree to that completely. Status quo, legal quo, your league quo is also a thing. But despite that, legal चीजें करना एक छोटी मॉडल के लिए एक बड़ी मॉडल के लिए सिमिलर बात है. छोटी करेगी तो शायद ब्रांड कहेगा हम नहीं साइन करें, आप अपने आप को क्या समझती हैं, हम नहीं इसमें फंस रहे. इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है. अगर सारे यूनिफाइडली कोई चीज करते हैं तो ब्रांड किसको लेगा? यूनिफाइड होकर. दैट्स अ की वर्ड हियर. अगर सब मिलके इसको फॉलो करेंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी. And you know, I've given free legal aid to a lot of people in the industry. My firm has. I'm not going to obviously name them, but do it. Make a little contract. I'm not even saying make a big contract, but don't give an impression that you are value less, because you're not. हाँ, your you're time, beautiful, your you're effort, gorgeous, your time, सबकी एक everything value is है. very precious. हाँ हाँ बिल्कुल. अच्छा, अब बताओ तो फिर क्या एक्टिंग इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी है या फैशन इंडस्ट्री? Which is easier to cope with? I think mentally I would say acting. Is easier? It's easier.
Less toxic? Less toxic, I would say yes. Fashion, I enjoy doing a lot, obviously, because I've mastered that skill. Acting, I'm still working on, even though after the dramas and the film and everything, I feel like I need to work and go a long, long way there. But toxicity-wise, yes, I would say that acting is less toxic. Fashion, I would work because maza aata hai. It's a thing that for me is not a skill also. It's it's like going there and I own everything. You own the place. You own the aura. It's your zone now, no? Yeah. It's your zone. But I feel like acting is positive in that manner that I found myself relating with a lot of characters that I was doing also. अच्छा. I found that very interesting. जब हम मॉडलिंग करते हैं तो एक मॉडल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ग्लैमरस हो, उसका एक्सप्रेशन सिमिलर हो, और वो like she's either hot or glamorous or pretty or शर्मीली or whatever her signature is. बट वो रियल नहीं होता. मतलब एक रियल लड़की, आप और मैं, हम हंसते भी हैं, हम रोते भी हैं, हमें गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है. तो जब एक मॉडल एक्टिंग में जाती है, वी डोंट अंडरस्टैंड कि उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होता है बिकॉज 5-6 या जो भी साल से शी इज नॉट बिन गिवन द लिबर्टी टू फील दोज इमोशंस. Like even if I'm angry on camera I have to look like I don't really care. I'm a glamorous girl and I look beautiful. You have to give a single expression. Yeah. And when you go to acting, you actually are doing real things जो आप normal life में करते हो. So you आप enjoy रोते that. हो, you get hurt, you get angry, and you can relate to it. Did you think that you'd act when you were starting off as a model and building I think your I've never thought of anything other than law in my life that I would do. Things kept coming in and I kept making the goal that how did acting come in? Tell me about that. I think when I was modeling, my first offers were there. I got 2 offers for acting. At that time, I didn't pursue them because I think I was modeling too much. I didn't have the schedule and I was really confused as to how am I going to make such a big jump. And then after that, the third script that I got was Beagles, Jamun. And in that also, I remember ke 6 naam the and 5 of them were actresses. Beagle ne suggest kiye the 6 naam? I think it was the director and the writers and the producers Achha, list they all had come them, up with 6 names. ये 6 हमें auditions लेने हैं. And when I saw the names, I आसान words में I think I would say that I was like कि कोई वो होता है ना क्या वहाँ पे कैमरा लगा दिया आपके साथ किसी ने मजाक किया है. 5 established actresses थी और एक तुम थी, है ना? And I felt like that. I was like कि क्या मेरे साथ कोई मजाक करना चाह रहे हैं, मतलब I know कि I'm not an actress, ये साबित करने की ज़रूरत क्या है? So, but they were persistent about it. So I sat down in my Lahore apartment. I didn't have much कि मुझे auditions देने आते होते. I had a lamp in my lounge, and I asked a friend कि इस lamp को आड़ा करो. It was a standing lamp. I was like इसको आड़ा करो and just say the lines with me. And I sent that, and the next day, I was selected. Oh. The very next day, I got the news that you were the best out of everybody. हालांकि बाकी 5 जो थी वो actresses थी, they were professional actresses while you were just starting. I think that's where I also realized that ये confidence वाला जो मेरा फंडा है ये हर जगह चलता है. हाँ, you have to be confident. Yeah, you don't have to ever look vulnerable. हाँ, लोगों को ना पता चले कि आपको डर लग रहा है. Yeah. चल जब लग भी रहा हो. Yeah. हाँ. अपना डर अपने साथ बांटें, उसको एक्सेप्ट कर लें कि मुझे डर लग रहा है, इट्स नॉर्मल. अब क्या? अब दिखाने बैठ तो नहीं जाना है. अब क्या इज द सवाल where you have to decide yes or no. अच्छा, तो फिर आपने शूट की जामन का दरख्त. What was the experience like? You were working with an established veteran like Adnan Siddiqui. I think उन्हीं के साथ आपके ज़्यादातर scenes हैं. Tell me about that. You were working with such an established actor, known for his brilliance. I think that when we first met on set and we were discussing our scenes, because most of our scenes were together, I didn't feel like that he was veteran. He was very, very casual, nice, very humble. And he and I had a common habit कि हम script को pen के साथ पकड़ते थे और जो चीज़ हमें लगता था कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसमें हम ये चीज़ add कर सकते हैं या minus कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझसे एक pen borrow किया था. And that was the element where I realized कि ये एक आदत similar है. So that means that I have the ability to understand कि कोई चीज़ मुझे naturally feel हो रही है. Just like he did. He appreciated it. He guided me a lot throughout the set. But I think most importantly, he taught me that what you're doing naturally is the best. Achha, don't try to act. Okay. Just do it.
Okay. read the character and think of this girl who's done this and put yourself in that girl. Don't think कि कौन सी लड़की ने कैसे किया होगा, उसने क्या फील किया होगा, तुम क्या फील करोगे, and do that. And I did exactly that. So it was very comfortable. I think all of our closer scenes also, I was very comfortable. We had a very laughable environment, and we were both fans of desi food. हमें खाना चाहिए होता था शाम में, which was घर का खाना completely. So we all bonded over that. It was a very, very comfortable set. मैं सोच रही हूँ कि तुमने ड्रामा स्क्रिप्ट्स को पेन से कितना उसके बाद करेक्ट किया होगा। जब से तुमने मुझे पेन की बात बताई है, आई एम थिंकिंग कि दिस वाज जामुन का दरख्त, इट वाज अ बिगुल उसमें तो करने की इतनी कम जरूरत प्रोजेक्ट। पड़ी थी। यस यस, बट देन यू हैव गॉन ऑन टू देसी ड्रामास जो आप कह रही रिलेटेबल होते हैं लेकिन थोड़े लंबे भी होते हैं, थोड़े बिल्कुल होता है। हाँ, तो बहुत आई फील लाइक हाँ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बट दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब। व्हेन यू टेक अ जॉब यू हैव टू एक्सेल इट। अब ज़्यादा मेहनत लगती है तो ज़्यादा डालो, बट आई फील लाइक रिटर्न एंड द वर्थ इज सो मच मोर देन द मेहनत। हाँ हाँ, फॉर यू इट्स वर्किंग वेल माशाल्लाह। अच्छा, other veteran actors, because Adnan Siddiqui was the first veteran that you worked with. उसके बाद ड्रामा सेट्स में तो बड़ी बड़ी कास्ट होती हैं, बहुत से बड़े एक्टर्स भी होते हैं, छोटे नए भी होते हैं, हर यू नो, तो द वेटरन्स आर दे जस्ट एज सपोर्टिव इन द ड्रामा सेट? बगैर नाम लिए बताएं। आई थिंक मोस्टली होते हैं, कुछ जो चंद नहीं होते। आई वुडंट से दैट दे आर नॉट सपोर्टिव, क्योंकि वो वेटरन्स होते हैं तो एक एज एलिमेंट भी होता है मेरे साथ जो मैंने मॉडलिंग में पहले फेस किया हुआ है। लाइक अ वेरी यंग पर्सन इज़ नॉट वे टू रिलेटेबल टू यू, तो उनके साथ आपको एक सर्टेन बॉन्ड बनाना पड़ता है, एंड इट्स रिस्पेक्टफुल कि आप खुद कोशिश करें। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि आप लीड पे हैं या लीड पे नहीं है, इट्स अबाउट कि वो वेटरन है, जो एक्सपीरियंस उनके पास है वो आपके पास 10 साल में भी नहीं होगा। सो गिव देम रिस्पेक्ट एंड ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट विल कम आउट ऑफ इट। And when you have a bond that's beyond scenes, behind the scenes, then it comes out beautifully outside in the scenes. You have to be peace with somebody. अच्छा, और कभी ये नोशन आपको टीवी ड्रामा सेट पे नहीं मिला कि मॉडल है, एक्टिंग नहीं कर सकेगी? I think acting industry से कम मिला, fashion industry से थोड़ा सा था कि you know you're too thin, models नहीं ली जाती हैं, I mean and you don't need it, you're a supermodel. एंड वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बैकलैश मिला कि वेट गेन करना होगा, लूज करना होगा, बट आई फील लाइक कि जब मैं एक्टिंग में गई इट वाज प्रीटी वार्म। दे एक्सेप्टेड मी एंड दे वर एक्चुअली they took advice from me from a lot of times, like the way they made hair and the way I used to do it while we do in fashion. Styling advice. Yeah, they were very nice to it. They were like, you know, we've never done it like this. It looks great. So we bonded over a lot of things. Like now I'm shooting with Mohib, who's again a very, very good colleague to work with. He's very cooperative. He's funny. He's very supportive. He's very good to work with, patient to work with. So वहाँ yeah. तुम कभी इंटिमिडेट नहीं होती? फॉर इंस्टेंस मोहित मिर्जा का आपने नाम लिया, अदनान सिद्दीकी सिमिलरली, these are fabulous actors. They're known for their brilliance, and you are starting out. You're learning the ropes. Yes, confidence अच्छा है, but दिल में कभी इंटिमिडेट होती हो because your co-actor is somebody with this long list of brilliant dramas and films to his credit. अच्छा, generally I don't think कि intimidate is word in my dictionary. अच्छा, वो नहीं होना होता, but I wouldn't say कि that doesn't mean कि आप होते हैं। Behind the scene कभी-कभी जो आप किसी के साथ पहली दफ़ा करने जा रहे होते हैं, कोई चीज़ आप में होती है थोड़ी सी intimidation, but I counter it with that I have to make myself so good that I take their appreciation. Once I get that you know we didn't feel like we were working with somebody new. अच्छा, we felt completely natural. For me that's a win, and then I don't have to be intimidated because they're comfortable with me. अच्छा, ये बताओ, अब आप ड्रामा एक्टिंग में हैं, जामुन का दरख्त वाज ऑफ कोर्स अ बिग स्क्रिप्ट, थोड़ी और ही चीज़ थी, अब आप टीवी ड्रामा के रेल में आ गई हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ सीन्स डू यू डू मोस्ट इजीली? Very surprisingly for myself only, the crying scenes. I did not ever imagine myself. फिर तो करियर बन गया तुम्हारा ड्रामों में। महा, क्या बात कह दी तुमने। नहीं यार, I think also मैंने उसका एक वजह भी ढूंढी कि क्यों पसंद भी आता है, but I'll come to that later. But as a person जो पहले नहीं देखती थी ड्रामे, मुझे बहुत अनरियलिस्टिक लगता था कि ऑन द क्यों लड़कियां मेकअप लगा क्यों रो रही हैं, but when I started relating to it, I started understanding how I relate to it and why people relate to it. मतलब भले पाकिस्तान में चाहे घर कितने पढ़े लिखे हों, चाहे घर कितने बड़े हों, कितने छोटे हों, हर औरत वो ड्रामा क्यों देख रही है?
at some point or the other she's relating. To that कोई ना pain कोई or लड़की that इस बात से pressure. रिलेट कर रही है कि ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया गया, कोई लड़की इस बात से रिलेट कर रही है कि शादी जल्दी हो गई, मैं थोड़ा और कर सकती थी, कोई माँ इस बात से रिलेट कर रही है कि शी वाज डूइंग हर जॉब, बच्चों के लिए जॉब छोड़ दी गई. वो जो एक एलिमेंट हम दिखा रहे हैं औरतों की तकलीफ का, उसको इतने व्यूज़ क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज वी आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दैट वुमन एट होम एंड शी इज़ रिलेटिंग. और तुमने किस चीज़ से रिलेट किया? What made you cry? I related to my own life and my own sad events. I think things that I felt when I entered into this field, things that I heard and things that I experienced, वो मेरे लिए अब तक आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल थी मेंटली फेस करने के लिए. तो मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती थी और वो भी कहीं ना कहीं मुझे कैरेक्टर्स में दिखते थे. लाइक फॉर एग्जांपल वर्किंग वूमन जब हम दिखाते हैं तो हम दिखाते हैं ड्रामों में कि उसको मसला हो रहा है ससुराल में या यहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है एज अ वर्किंग वूमन. For me, it was when I started to model, even though I was a very established lawyer, I had my firm, I was good, I was degreed, I was educated, and I loved cooking. I was like the next door girl, basically. अच्छा. I was a glamorous girl on set, but घर जाके I'm this person who, you are also this person who goes into their PJs, has dal chawal, she's that girl. पर एक stigma बन जाता है where people say that she's not a homemaker. That शादी नहीं हो word, सकती. it's a 4-letter word, हाँ. home, but it has the impact of the world on a woman, because I feel like किसी भी औरत की essence ना उन 4 लफ्ज़ों में है जो बड़ी आसानी से आप पे लेबल कर दिए जाते हैं कि she's not a homemaker. अगर काम कर रही है और साथ में बच्चे संभाल रही है तो बच्चों को full attention नहीं है ना. she's not the perfect woman or the perfect homemaker. मॉडल है तो क्या पता किस माहौल में होती होगी, किस माहौल में पूरा दिन काम करती है और फिर घर आके सो जाती है खाना खा के. जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन अपनी अम्मी के साथ दाल चावल बनाती है. Why do you have to make women feel like that on every step and every decision they take? So in my personal life, I heard that a lot in the beginning, prior to success. When success came, obviously people change with success. So some people changed. But in my personal life, the relationships also went a little more towards, now that if I decide to settle, तो ये तो अब नहीं करना ना, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है. As if almost, आपकी achievements, everything becomes like a trophy that they're going to put in a cupboard. And that's about it. ये कोई नहीं पूछना चाहता कि आपको घर बना, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है. एंड आई डोंट थिंक कि दुनिया में कोई भी लड़की ऐसी पैदा हुई है जो घर नहीं बनाना चाहती. वी लव आवर होम्स. You love your daughter, I love my sister, my mother. We do all of those chores. फारिग दिनों पे हम सोफे भी झाड़ रहे होते हैं, पर्दे भी देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं. We are the same women. But to hear that instantly, और जब आपकी settling time आती है life में, to hear that from the people or the person that you're settling down with or planning to settle down with, कि अच्छा अब ये छोड़ोगी तो perception ये बनेगा ना, it's very hurtful. क्योंकि कहीं ना कहीं you have to feel like that you have to make a choice between the identity that you have achieved with all of your hard work just to prove that you're a woman, because home is a woman. Essentially अल्लाह ने बनाया है औरत को इसलिए कि वो घर बनाती है, वो घर समेटती है, वो घर संभालती है. उसके अंदर इनेट है. लेकिन लोगों की परसेप्शंस कुछ और हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका काम ऐसा क्योंकि वो है काम या आप करती है या सक्सेसफुल उसका हैं. काम ऐसा है या उसका काम आपके लिए लिहाज से अच्छा नहीं है, या प्योरली कभी कभी सिर्फ क्योंकि वो काम करती है. वहाँ मॉडल्स के साथ ये स्टिग्मा शायद ज़्यादा अटैच्ड है. तुम ये बता रही हो तो मैं सोच रही हूँ कि शायद लोगों की परसेप्शंस फैशन वर्ल्ड और मॉडलिंग के बारे में काफ़ी क्रूल होती हैं. आई थिंक मॉडल्स के साथ, एक्टर्स के साथ, दोनों के साथ इक्वली, क्योंकि लाइमलाइट में है. लाइमलाइट में है. बट आई वुडंट डिनाई द फैक्ट कि इट्स अदरवाइज. मैं कोर्ट में भी गई हूँ, मैं लॉयर भी हूँ. आप किसी कोर्ट में घुसते हैं एज अ वुमन, मी बीइंग अ सीनियर लॉयर और एन ओनर ऑफ द फर्म, मुझे अज्यूम नहीं किया जाता कि मैं आई एम अ सीनियर लॉयर और आई एम द ओनर. मुझसे पूछा जाता है कि आपकी सीनियर कहाँ है. अगर मैं उन्हें बोल दूँ कि मैं फर्म की ओनर हूँ, मैं खुद आई हूँ पर्सनली, दे लाइक हाँ फर्म जिसके नाम पे वो किधर है. क्यों महा, क्यों?
क्योंकि इनेट है उनके दिमाग में ये बात। और अगर आप इस्टेब्लिश कर लें बाय इंटिमिडेटिंग कि मैं हूँ, दैट्स मी, ये सब मेरा बनाया हुआ है, तो सेटल करने के टाइम पे वो बोलते हैं कि ये सब छोड़ दो, तो हम कंसिडर कर लेंगे दैट यूर अ होम मेकर बिकॉज सैक्रिफाइस इज पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन। बट आरंट वी सैक्रिफाइसिंग एवरी डे? हम बच्चे भी पैदा करते हैं, संभालते भी हैं। यू हैव अ डॉटर ऑफ योर ओन. My mother did it. She used to work back and forth. She was the first international air hostess of Pakistan. अच्छा. But she did it. And she taught me namaz. She taught me cooking. I know every bit of it. Why the question? कि जब तुम छोड़ दोगी तब हम ये opinion बना सकेंगे ना. It took a toll on me, obviously, even though I was young. But it's worse when you're young because you don't want to be thinking about those things. You're an ambitious girl who's doing pretty well for her age. हाँ. पर अगर आप एक छोटे टाइम से सोचना शुरू करते हैं कि यार 26, 27, 28 तक तो यही होगा, यही फ्यूचर है, your growth stops and your mental health deteriorates day by day. You start considering and looking at yourself in the mirror कि कोई कमी है. मैं क्या गलत कर रही हूँ? Because outside world everybody loves the way you look and they're complimenting and they want to take pictures with you and they're all about you. But then there's also a part where they say कि हाँ वो सब तो ठीक है, but you're not a home woman. That pinches you in the gut. I think another thing is that while a woman goes through all of this pressure, specifically अगर मैं इस इंडस्ट्री में ले लेती हूँ, बहुत कॉमन स्टिग्मा है कि कोई मॉडल है या कोई एक्ट्रेस भी है तो उसका जो भी शेप या जो भी फिगर है, जो भी शक्ल है, अगर कम है तो वो ड्रग्स करती होगी, अगर उसके फीचर्स अच्छे हैं तो बोटॉक्स होगी. आप मानना ही नहीं चाहते कि भाई ये औरत खूबसूरत है, अच्छी है और घर संभालती है. आप एक पॉजिटिव चीज सोचना ही नहीं चाहते. How mean. And it hits you because you're working tirelessly day and night. Why do you have to validate yourself as that woman? हाँ, आपको और क्यों वो जो दुनिया को आप कर रहे प्रूव होते करना हो है? फील एवरी डे, उसकी वजह से आप एपेटाइट लूज करते हो, वेट गिरता है. You start looking like that, you're depressed, fine lines आती हैं and all of that. The tiredness starts to show. तुम यंग भी बहुत थी ना, तो शायद यस वो जो तुम कहती हैं ना टेक्स मोर ऑफ अ टोल, क्योंकि आप अचीव करने में लगे होते हैं और फिर ये नेगेटिव कमेंट्स दे ब्रिंग यू डाउन. अच्छा, तो you went through a mentally difficult time because of these comments? I did. I think. How did you deal? I think working was my mechanism. I didn't leave work for a minute. I wanted to work every day. I made it a point that I'm not going to put down my work or my achievements. That was very clear in my head. No matter how much, people are saying that I'm not sacrificing enough or this or that. I knew that when the right time and the right person, right things will come. Sacrifice कुछ और होता है. Sacrifice ये नहीं होता कि अपनी job छोड़ दो, अपना कमाई हुई शोहरत छोड़ दो. और खुद से औरत sacrifice कर भी देगी. आपको औरत से कभी मांगने की भी जरूरत नहीं है. She innately sacrifices every day, biologically भी, hormonally भी. बच्चे ही पैदा करती है. वो सब क्या है? फिगर्स खराब भी होते हैं, बनते भी हैं. वो हम मॉडल्स के ही होते हैं, एक्टर्स के ही होते हैं. And we deal with it. So it affected me. Yes, I had some nights where I could not obviously deal with it perfectly. I started taking sleeping pills because I was overthinking a lot and it was very harmful. But I think the thing that helped me the most was that one night I went to sleep and I prayed to Allah Miyan कि मुझे तहज्जुद पे उठा दीजिएगा. And I don't know, ever since then मैं सोती हूँ अपने टाइम पे, पर तहज्जुद के वक्त में मुझे उठा देते, मेरी आँख खुल जाती है. खुद ही से, without an alarm? Without an alarm. Oh. और मैं हर रोज़ वो दुआ मांगती हूँ. मैं उनसे कुछ स्पेसिफिक नहीं मांगती, मैं उनसे सिर्फ सुकून मांगती हूँ और बेहतरी मांगती हूँ और जो उनकी चाहत है वो मांगती हूँ. And ever since then things skyrocketed for me, from my movie to my success to the people that were affecting me also. वो झड़ गए मेरी ज़िंदगी से. Now I don't remember. And now I don't care also कि वो कहाँ है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि शायद वो कहीं भी नहीं है अपनी ज़िंदगी में. अगर मैं उनकी बातों पे फोकस करती रहती तो मैं उनकी जगह पे होती. So I think that it's him and it's you and it's your parents that help you out. Prayer helps you. Prayer really helps you. I think prayer genuinely helps you. He hears you and he makes you see things very clearly.
मतलब जब तक मैं उन चीज़ों पे फोकस कर रही थी विदाउट प्रेयर, मेरा फोकस भी ख़राब हो रहा था। बट विद प्रेयर मुझे शायद वो नज़र आना बंद हो गए, और फिर मुझे नज़र आया कि एक अंबार है लोगों का, and there's awards, and there's my first movie has gotten to 3 international awards, and things happening जो मैं नहीं देख रही हूँ। तो आपका नज़रिया बदल जाता है जब आप खुदा से बात करते हैं। So you got peace that way. I did. और जो लोग ये बातें करते हैं, जो बातें बनाते हैं, जो जज करते हैं, क्या ये मैसेज में से होते हैं कि इंडस्ट्री में भी होते हैं ऐसे लोग? आई थिंक मैसेज में आपको फिर भी कम लोग मिलेंगे, क्योंकि मैसेज में बहुत सारे लोगों ने मुझे तो पर्सनली बहुत प्यार दिया है। आई थिंक वेर एवर आई एम इन माई लाइफ इट्स बिकॉज ऑफ द मैसेज। बट आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। From your own fraternity? Yeah. There's a lot of people that would not take your success or you going up or know your weakness or what's affecting you, repeat that over and over on you, because they know that's going to take you down. All you've got to do is कि you contact him और वो लोग झड़ जाते हैं। Honestly झड़ जाते हैं। मैं ये लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे सूखे पत्ते से वो थे और वो गिर गए हैं वो पेड़ से, और पेड़ अब जो है बिल्कुल ठीक है, हरा भरा है, नज़र ही नहीं आते आपको। Okay. आप उन्हें आते हैं, आपको वो नहीं आते। वहाँ पाकिस्तान में रहते हुए लेकिन एक डर लगता है इन नोशन से कि जब आप कहीं जाए तो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं सिक्योरिटी रिस्क पे तो नहीं हूँ, मैं विल आई एवर सेटल डाउन। एक और कंसर्न ये होता है बिकॉज मेन ऑल अराउंड यू हैव दिस कॉन्सेप्ट। I think of course like that. I think it's very natural for any woman to feel like that, and not just entertainment. Any woman that is working or is facing such No, things, but you're in the चाहे वो limelight. लिबास पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, ये डर हो जाता है कि यार मैं सेटल कर पाऊँ या नहीं। Will I be the eventual homemaker? हाँ, या ये कहीं सही तो नहीं कह and रहे I'm not gonna lie, इनकी बात। मेरे भी दिमाग में रहता है। हाँ। But then I feel like एक कुछ चीज़ें होती हैं मलिया ज़िंदगी में जो आपके हाथ में होती हैं। जैसे I can work hard, I can make my fate, I can change my fate, I can be successful, I can make goals. कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ने आपको वादा करी हुई होती हैं। अल्लाह ने आपको कह के भेजा है कि मैंने तुम लोगों को जोड़ों में बना के भेजा। अल्लाह ने आपको सुकून प्रॉमिस किया हुआ है, सिर्फ ये बोला है कि मांगने आओ। हाँ। सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फैक्ट दैट जब सही वक्त होगा और सही इंसान होगा ना, अल्लाह आपको वो चीज़ दे देगा। वो सही इंसान अभी नहीं मिला। आई थिंक थोड़ा सा लेट रहा है तो अच्छा है, क्योंकि मैं इस वक्त काफ़ी अच्छे जोन में हूँ। हाँ, अच्छा, अब उस आई एम अबाउट टू रैप अप और मैं उस जोन की बात करना चाहूँगी बिकॉज जामन का दरख्त हैज डन ट्रेमेंडसली वेल इन द फेस्टिवल सर्किट, यू नो, अराउंड द वर्ल्ड आई बिलीव। मुझे हर दिन एक न्यूज़ अलर्ट आता है कि एक और फेस्टिवल, एक और अवार्ड, एक और रिकग्निशन। क्या ये एक्सपेक्टेड था किसी पॉइंट पे? क्या ये बात होती थी सेट पे मूवी बनाते हुए? आई थिंक व्हेन वी वर ऑन सेट तो I was one big dreamer. I've always been a big dreamer. So was Adnan. He also dreams big. तो ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि जो हम बना रहे हो बिल्कुल यूजलेस है, पर इतनी नहीं थी दैट यू नो वी आर गोइंग टू गेट दिस, क्योंकि ये जो आप बोल रही हो जो आपके साथ होता है, हमारे साथ हर रोज रात में होता है कि वो हमने वैंकूवर भी जीत लिया है, कांस भी जीत लिया है, एंड हम मूवीज देख रहे होते हैं। लाइक देयर वाज अ मूवी व्हिच वी अगेंस्ट व्हिच वाज प्लेड बाय जॉनी डेप, एंड आई कॉल्ड अ कलीग एंड आई वाज लाइक, यू नो, अब नहीं, अब बस हो गया ये मजाक, यहाँ नहीं हम जीत सकते, बट वी वन। And that's an amazing feeling. Yes, especially for your first ever acting project to do so well. I mean, that's so exciting. Acha, 3 acting projects are done and you are currently working on your 4th. आपको लगता है as an actor you are improving project after project. Body language तुम्हारी smooth हो रही है. Every day. तुम्हें पता है अपने हाथों को कहाँ रखोगी जब स्क्रीन पे? Every day. Every day I notice it. मैं I notice कि जिस तरह मॉडलिंग में हम एक ग्लैमरस तरीके से खड़े होते हैं, एक्टिंग में हम एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से खड़े होते हैं। एक औरत गुस्से में भी हो तो उसके हाथ थोड़े बंधे होते हैं। उसकी टीवी में ना, ये तुम फिल्म की बात नहीं कर रही। फिल्म में तो ऑब्वियसली देयर इज मोर स्पेस, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड। हाँ, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू नोटिस। डेसिबल, आप जिस डेसिबल से स्टार्ट करते हैं, जिस कैरेक्टर को आप एक डेसिबल देते हो, अगर वो चिड़चिड़ी लड़की है, इफ शी इज अ सक्सेसफुल लड़की है, अगर वो बहुत रोती लड़की है, जैसे मेरे पहले ड्रामे तो आई थिंक मेरी कोई 2 मंगनियाँ टूट के, फिर मेरी निकाह टूटा, बारात में कोई चला गया, इतना रोई हूँ कि मुझे रोने के सीन्स अच्छे लगने लगे। और दुल्हन भी बनी ना? बहुत दुल्हन बनी है, 5 दफ़ा तो मैं दुल्हन बनी उस ड्रामे में। तो तुम प्रो हो गई फिर रोने में? हाँ, आई थिंक आई फेल्ट लाइक आई बिकेम अ प्रो, बट आई आल्सो रिलेटेड टू इट बिकॉज ये होता है शादियों में
कि कितना पढ़ेगी, आगे पढ़ेगी, उस वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। मैंने ये सवाल खुद सुने भी हैं, मेरे साथ ये नहीं हुआ कि मेरी शादी टूटी है, लेकिन मैंने सुने हैं। हाँ, around you, it's a pretty हाँ। regular thing here in Pakistan, unfortunately. आज भी आई थिंक आई वुडंट नो कि कौन लोग हैं या किस तरह पूछते हैं, बट आज भी लोगों में ऑडेसिटी होती है मुझसे पूछने की कि अब और कितना करोगी? लॉ फर्म खोल लिया, घर बना लिए अपने, सुपर मॉडल हो, फिल्म कर ली, जो पहली फिल्म सबसे सक्सेसफुल है, अब और कितना करोगी? मतलब कितने पे मैं क्यों लिमिट लगाऊं? हाँ, और कोई आदमी से तो नहीं पूछता। यू हैव टू बी लिमिटलेस। हाँ, और जब मेरी जिंदगी में सेटलिंग पॉइंट आएगा तब मुझे पता होगा कि मुझे क्या चीज़ अलग करनी है और क्या अलग करनी है। तो वो लिमिटलेस का क्वेश्चन आई थिंक अब लिमिट वाला क्वेश्चन नहीं है मेरी जिंदगी में। the sky is the limit. हाँ, the sky is the limit, है ना? अच्छा। It's like my favorite song. It's called Unstoppable. हाँ, क्यों आप स्टॉप करें? जब सब अच्छा हो रहा है, जब मेहनत कर रही हो और उसका रिजल्ट इतना अच्छा मिल रहा है। और आप बहुत सीखते हो, मतलब अपने कल्चर के बारे में। मैं सीखी कि इन रोल्स में औरतों को क्या पसंद आता है, वो कौन सी लड़की क्यों देख रही है, रोने क्योंकि वाली, उनके साथ हुआ रोने क्या वाली है, लड़की। पर वो क्यों रो रही है, वो एक बहुत कॉमन कहानी है। वो इसलिए भी देख रही हूँ कि मिलिया उनके घरों में होती है। हाँ, it's Undeniable very sad, बात है। but they relate to that They sadness. relate to it and they watch it and they love that girl. उसमें खूबसूरती है क्योंकि वो अपनी कहानी नहीं बता सकी, पर कोई लड़की आके बता रही और है। वहाँ एक बात बताऊँ, शायद some of us are fortunate और हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन हमारी किसी दूर की दोस्त, बिल्कुल cousin, हुआ है। किसी ना नेबर, किसी ना किसी के साथ बिल्कुल, हुआ है. बिल्कुल So we होता can है। all actually relate to it, living in Pakistan, Yes. living in the society. I think anybody that says that they cannot relate to it as a Pakistani is lying. What I can't relate to is, and I'm sure you can't either, is when a 25 episode drama goes to 55. I love your question. I love that question. Yes, I think nobody relates to it. I don't think anybody likes it either. But like modeling has commercialization, so does acting. Comes with the job. Pros and cons. और हम दुआ कर सकते हैं कि हम सब दुआ बेहतर कर हो सकते जाए. हैं तहज्जुद में कि यार ये 55 ना हो, चलो 40 पे खत्म हो जाए. हाँ, हाँ. But yeah, part of the job. Part of the job, and it's great कि you took the plunge. आपने एक बात off the record मुझे कही थी, आग का दरिया डूब के जाना है. तो आप मॉडलिंग के भी आग के दरिया में गई, and now you're plunging into acting. Yeah. I think that's something that my mother used to read a शायरी and she used to always tell me कि उन्हें बहुत पसंद थी ये. हाँ. She used to do it like this. She used to be like आग का दरिया है and डूब के जाना है. अच्छा. And I used to love it when she used to do it. हाँ. And I started relating to it कि कोई भी फील्ड आसान नहीं है. कुछ सारी भी आसान फील्ड आग का दरिया है. आपने जाना है तो आप जाना रास्ता तो है निकालो ना, जाना तो है. और आखिर तक पहुंचे फिर. चलो बीच में पहुंचो नहीं रुक माँ. I'll be cheering for you. I have great faith in your acting career, and I'm glad you're not leaving modeling either. No, I'm Yeah, not. so prove them wrong. Be a model, be an actor, be a lawyer, do it all and win. Yep, absolutely. Thank you. You're welcome, Milia. It was lovely talking.